क्वेश्चन में here is a horizontal line, you can say table, and over the table there is an inclined mirror shown like this. Inclined mirror such that this side is polished. Okay, and always remember the side opposite to the polished is the shining one. This angle is given to us as 40 degree. 40 degree. Now he says a line parallel to the floor. This is your floor. Yellow color is shown as floor. A line, a ray of light parallel to the floor strikes the mirror. What is the angle of reflection? देखो मैं दिखा रहा हूं आपको ग्रीन कलर की लाइन दिखा रहे हैं हम जो कि येलो कलर के पैरेलल है। ये हो गया बेटे हमारा इंसिडेंट और हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना। सभी बच्चे ड्रा द डायग्राम। शाबाश, ड्रा द डायग्राम। व्हाई आर यू सिटिंग आइडल? ड्रा द डायग्राम। Some students are not serious. Should I click their photograph and send to the principal? Ma'am, they have not yet started. For example, Richardson, first bench central line. बच्चे ने कॉपी नहीं खोली अभी तक। फर्स्ट बेंच सेंट्रल लाइन रिचर्डसन। शाबाश, ड्रा दिस फिगर। Okay, now let's proceed. But in order to calculate the angle of reflection, first of all, we have to complete the diagram. How will we complete the diagram? Look here. Incident ray is shown in the green color. At the point of incidence, कौन सा point of incidence? Where the teacher has put the brown color dot. Brown color dot. P point. P point is the point of incidence. Here you have to draw the normal. Normal कौन सा होता है बच्चे? Normal which makes the 90 degree angle with the mirror. So if this is your normal, sure shot, this line, this angle is 90 degree. Okay. So the angle made with the normal, which is shown in the magenta color by the incident ray, is known as angle of incidence. और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर ही एक एंगल और बना रहे हैं टीचर, जिसको टीचर येलो कलर से दिखा रहे हैं बेटे। देखो आप येलो कलर से कौन सा दिखा रहे हैं? ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएंगे जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर ही होगा। और ये तभी मुमकिन है अगर हमारा रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहां से ऐसे चला जाए। रिफ्लेक्टेड रे। देखो, एंगल इंसिडेंस और एंगल रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होते हैं। इसका मतलब यह हो गया अगर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस भी पता लग गया तब भी हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकाल पाएंगे। अब और देखो, समझदार बच्चा बोलेगा सर एक बात बताऊं। मैंने कहा क्या बेटे? सर ये जो आपका नॉर्मल है ना डॉटेड वाला, जिसका आपने 90 डिग्री उधर को एंगल बनाया, इसका एंगल इधर भी 90 बनेगा। आई सेड बिल्कुल सही। नॉर्मल तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनाएगा, जो डॉटेड ब्राउन कलर की लाइन है वो व्हाइट लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तभी तो डॉटेड ब्राउन कलर को नॉर्मल बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। ओके, अब आपको जूनियर क्लासेस में एक मैथ का पॉइंट कराया था, वो याद होना चाहिए। वो कौन सा? अगर दो लाइनें पैरेलल हों और ट्रांसवर्सल उनको कट करे तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं और इनको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल।
आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का प्रेजेंट क्वेश्चन, इस पॉइंट को प्रेजेंट क्वेश्चन में कैसे यूज करोगे? मैं कहूंगा बेटे गौर से देखो, क्या ये व्हाइट कलर वाला 40 डिग्री का एंगल आपके ग्रीन कलर वाले एंगल के साथ अल्टरनेट एंगल है या नहीं है? आपको किस लग रहा, आपने बोला यस, ऐसे ऐसे, ये अल्टरनेट बताया आपने, तो ये पैरेलल लाइन है दोनों, और व्हाइट वाला ट्रांसवर्सल हो गया। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री हो। गॉट इट? अब अगर ये 40 डिग्री है, इस 40 डिग्री में मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐड कर देता हूं। 40 डिग्री प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐड कर दिया। गौर से देखो कितना बन जाएगा, ग्रीन कलर वाला एंगल 40 डिग्री, फिर पिंक कलर वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इतना एंगल बन गया बेटे, इतना। और इसी एंगल को तो टीचर ने 90 डिग्री शो करा हुआ है, देखो 90 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों के टोटल को 90 डिग्री कहा जा सकता है। यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, टेक द 40 डिग्री टू द राइट हैंड साइड, तो 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, आप सभी को पता है अलजेब्रिक साइन चेंज हो जाता है जब इक्वालिटी की दूसरी तरफ लेके जाएं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री हुआ बेटे। लेकिन हमसे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा ही नहीं, हमसे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा है। तभी एक बच्चा बोलेगा सर आपको नहीं पता, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। तो आपका जितना ये आया 50 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतना ही तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा, और यही हमारा आंसर हो गया। इसलिए आपकी सी ऑप्शन बनी। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया बेटे, जिनको ये समझ आ गया प्लीज रेज योर राइट हैंड। शाबाश। जिनको ये समझ आ गया प्लीज रेज योर राइट हैंड। डाउन। जिनको ये नहीं समझ आया प्लीज रेज योर लेफ्ट हैंड। जिनको नहीं समझ आया लेफ्ट हैंड खड़ा करें। लेफ्ट हैंड। भाई राइट नहीं, लेफ्ट। वो भी तब अगर नहीं समझ आया, मेरी बात ध्यान से सुनो, रामानुजम सेक्शन। जिनको नहीं समझ आया वो लेफ्ट हैंड खड़ा करो। फिर वही बात बेटे, जिनको नहीं समझ आया वो लेफ्ट हैंड खड़ा करो, लेफ्ट हैंड। हाँ, एक बच्चे को नहीं समझ आया मैम, ये देखना, एक सरदार बच्चा सेंट्रल लाइन, एक ही बच्चे का लेफ्ट हैंड खड़ा है, उसने भी डाउन कर लिया। लेफ्ट हैंड तब खड़ा करना है अगर नहीं समझ आया, राइट तब। कंफ्यूज नहीं होना। राइट मतलब एवरीथिंग इज राइट फॉर यू, यू हैव अंडरस्टूड इट राइटली। राइट मतलब राइट, अगर सब कुछ राइट समझ आया तो राइट हैंड, अगर कुछ गड़बड़ है तो लेफ्ट हैंड। ओके, आगे से ये नियम रहेगा। डाउन। शाबाश। तो सभी बच्चों को ये समझ आ गया, बहुत अच्छे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। हर क्वेश्चन के बाद मैं पूछूंगा ये बात, if everything is right for you from understanding point of view, you will raise the right hand. If something is doubtful in your mind, you will raise the left hand. Okay, let's talk about question number 7. Question number 7 में बेटे, no, question number 6. Sixth question. Point P is moving towards a convex mirror with a constant speed v along with its optical axis. The speed of the image is, देखो इसको मैं पूरा समझाता हूं। सबसे पहले हमारे पास ये एक कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में इस साइड से पॉलिश करते हैं बच्चे, और जो पॉलिश के अपोजिट साइड होती है वो हमेशा शाइनिंग सरफेस होता है, शाइनिंग। और इसके बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट को पोल बोलते हैं, पोल, पी से। और पोल से जो हम स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, पोल से, कौन बच्चा बताएगा इसको क्या बोलते हैं? एनीबॉडी जो इसका नाम बता सके। पोल से जो स्ट्रेट लाइन जाती है इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस सभी बच्चों को याद होना चाहिए। ओके, अब मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखता हूं। ये रखा मैंने ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज को बोलते हैं ओ,
स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं इसको। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखो बेटे, मैं आपको इमेज बना के दिखाऊंगा। यहां पर ऑब्जेक्ट रखने से इमेज कन्वेक्स मिरर में कैसा बनेगा। ये वही कन्वेक्स मिरर होता है जो हमारे व्हीकल्स में, स्कूटर में, कार्स में रियर व्यू देखने के काम आता है। हमारी कार के बाहर साइड पे लगा होता है कन्वेक्स मिरर। इसको देखने के लिए आपको दो बातें याद रखनी है बेटे, दो बातें। पहली बात, जो ऑब्जेक्ट से स्ट्रेट लाइन में लाइन जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, वो बाद में फोकस का फायदा लेते हुए रिफ्लेक्ट होगी। फोकस का। एक बच्चा कहता है सर करके दिखाओ, समझ में नहीं आया। तो देखो, सबसे पहले आप इस गोले को पूरा करो माइंड में, मेंटली। मान लो ये गोला ऐसे पूरा होता है, मान लो ये सफियर ऐसे पूरा होता है बच्चे। इस सफियर का जो सेंटर होता है ना बेटे, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। पी को क्या बोलते थे? पोल। इन दोनों के बिल्कुल मिडल में, मिड पॉइंट, जिसको टीचर ने ब्राउन कलर से लिखा, बिल्कुल मिडल में ये होता है फोकस पॉइंट। जिन बच्चों को नहीं पता ध्यान से सुन लो। सी को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। पी को क्या बोलते हैं? पोल। एफ को क्या बोलते हैं? फोकस। याद होना चाहिए सब कुछ। अब आपकी पहली बात, जो लाइट इस ऑब्जेक्ट से बिल्कुल पैरेलल जाएगी, ऐसे ग्रीन कलर से बराबर की दूरी बनाकर जाएगी, ऐसे ना ज्यादा ना कम, पैरेलल, वो यहां टकराने के बाद इधर को मुड़ जाएगी। और यहां जो खड़ा होएगा ना बंदा, उसको ऐसे लगेगा कि फोकस में से लाइट आ रही। अब मैं बना के दिखाता हूँ क्या। ये देखो, मैंने एक रे ऑफ लाइट निकाली। लेट मी चेंज इट्स कलर। मैं इसको येलो से बना रहा हूं। देखो, मेरी येलो वाली लाइन ग्रीन लाइन के बिल्कुल पैरेलल जा रही है। देखो, ये लाइन ग्रीन लाइन के पैरेलल यहां से टकरा के इधर जाएगी। मिरर के अंदर तो जाती नहीं कभी भी लाइट। लेकिन बेटे याद रखना, जो बंदा यहां खड़ा होगा, उसको ये महसूस होगी कि फोकस में से लाइट आ रही है। तो इसका मतलब, जब मैं इसको यहां से रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, तो मैं इसको ऐसे सोचूंगा, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से ऐसे खींच दूंगा। तो इसका मतलब यहां पर जो बंदा खड़ा हुआ है, उसकी आंख को ये लगेगा कि लाइट ऐसे जाके ऐसे नहीं आई। उसको ये लगेगा कि फोकस में से आ रही है, ऐसे एफ से आ रही है। हमेशा याद रखना, उसको ये लगेगा फोकस में से आएगी। अब बच्चा कहता है सर मेरे को क्या याद रखना है? याद ये रखना है, जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, रे ऑफ लाइट, वो टकरा के ऊपर चले गई। लेकिन इस बंदे को हमेशा ये लगेगा कि लाइट इस एफ पॉइंट से आ रही है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। आंख हमेशा ये सोचती है लाइट स्ट्रेट लाइन से आ रही है। आंख कभी भी ये खुद से नहीं सोच पाती कि इधर से गई होगी, इधर से टकरा के ऐसे है। ये उस रे के लिए है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। पैरेलल कौन सी होती है? ये गैप जिसका बराबर रहे। जितना गैप यहां पर है, उतना ही इधर, उतना ही इधर, उतना ही, उसको पैरेलल बोलते हैं। ये तो थी पहली लाइन। दूसरी आपने क्या याद रखनी है बेटे? दूसरी आपने याद रखनी है, जो लाइन, जो रे ऑफ लाइट फोकस के ऊपर गिरेगी, डायरेक्ट फोकस के ऊपर, इधर गिराऊंगा मैं आपको, वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आप कहोगे सर ये तो पुरानी वाली बात की उल्टी बात होगी। बिल्कुल सही। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो मिरर से टकराने के बाद ऐसे लगेगा फोकस में से आ रही। और जो जाएगी ही फोकस की तरफ, वो यहां टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस आ जाएगी। देखो, मैं आपको करके दिखाता हूं। और इस बार मैं इसको ब्राउन कलर से दिखा रहा हूं। देखो, इसकी तरफ लेके जाऊंगा मैं लाइट। ये ले गया।
ये देखो, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर देता तो यहां जाके जुड़ती, पर आप सभी को पता है मिरर के अंदर तो रे ऑफ लाइट जाती ही नहीं। तो जो लाइट फोकस की तरफ जाती है वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाती है, ठीक है। लेकिन जो इंसान यहां पर खड़ा होएगा, यहां पर खड़ा होएगा, उसको ये लगेगा कि लाइट तो हमेशा स्ट्रेट लाइन से आ रही है, यहां से नहीं आ रही, वो पीछे से सोचेगा, इधर से, वो देखो इधर से सोचेगा। तो मैंने इसको भी एक्सटेंड कर दिया, डॉटेड लाइनें दिखाई हैं, येलो भी और व्हाइट। जहां पर ये दोनों एक्सटेंडेड लाइटें कट करती हैं आपस में, वहां पर आपने इमेज बनाना है, इमेज। ये बन गया आपका इमेज। देखो जिस पोस्चर में ऑब्जेक्ट खड़ा है ऊपर को मुंह करके, हेड करके, उसी पोस्चर में इमेज खड़ा है। इसका मतलब है इरेक्ट इमेज बनेगा। और इमेज कितना छोटा बना ऑब्जेक्ट के मुकाबले, इसका मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से काफी छोटा होता है। कब? अगर मिरर कौन सा हो? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और तीसरी बात, क्या हम इस इमेज को हाथ लगा सकते हैं पीछे जाकर? नहीं लगा सकते। जब भी डॉटेड लाइनों से इमेज बने तो वो इमेज को टच नहीं कर सकते, वो रियल इमेज नहीं होता, वो तो वर्चुअल इमेज होता है। और एक बात याद रखनी है, ध्यान से सुनना, ये ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रखो, कहीं भी, इमेज हमेशा छोटा बनता है कन्वेक्स मिरर में, हमेशा ही छोटा बनेगा इमेज, और सीधा बनेगा हमेशा, और वर्चुअल भी हमेशा बनेगा। और ऑब्जेक्ट के हिलाने से इमेज भी अपनी पोजीशन हिलाता है, लेकिन बहुत स्लो मूव कर पाता है। ऑब्जेक्ट तेजी से भी मूव करेगा तो ये धीरे धीरे मूव करता है। इमेज की वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। इमेज का वेलोसिटी ऑलवेज लेस देन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। बोलो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? सिक्स्थ का, सिक्स्थ का कौन सा ऑप्शन चूज करोगे बेटे? कौन सा ऑप्शन चूज करोगे सिक्स्थ क्वेश्चन का? पढ़ो तो सही असाइनमेंट। अगर आपको लगता है सेकंड ऑप्शन तो डबल फिंगर खड़ी करो। ट्रिपल, थर्ड ऑप्शन लगता है तो ट्रिपल, ए ऑप्शन लगता है तो वन। जल्दी बताओ कौन सी ऑप्शन? रेज योर हैंड। एक बच्चा कह रहा है सेकंड, ऑलवेज मोर देन बना दिया उसने। एक बच्चा सेकंड कह रहा है, दूसरा फर्स्ट कह रहा है। रामानुजम में कोई बच्चा जवाब ही नहीं दे रहा। बेटे व्हाट इज योर ऑप्शन? रेज योर फिंगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगर आप सोचते हो फोर्थ ऑप्शन तो हाँ, ये पास्कल के बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है भाई, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया, मैक्सिमम ने। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, सिक्स्थ का ए ऑप्शन। इमेज जो है, ऑब्जेक्ट के चलने से इमेज चलता तो है लेकिन धीरे चलता है हमेशा। ऑब्जेक्ट तेजी से चलेगा, ये धीरे चलेगा। गॉट इट? तो याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर में जो हमारा इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड से कम स्पीड से चलेगा। और उस इमेज में ये तीन गुण होते हैं। तीन गुण कौन सा? वर्चुअल होता है, आप हाथ नहीं लगा सकते, सिर्फ देख सकते हैं। इमेज छोटा होता है, और जिस पोस्चर में इमेज होता है उसी में ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए इसको इरेक्ट होता है। अगर ये इमेज ऐसे ना बन के ऐसे उल्टा लटका होता तब हम इसको इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं, इन्वर्टेड। अब ये उसी पोस्चर में है, इसका भी हेड ऊपर को है, इसका भी हेड ऊपर का है, इमेज का पोस्चर वही है जो ऑब्जेक्ट का है, इसलिए हम इसको इरेक्ट बोलते हैं। इरेक्ट मैंने सीधा। इसी के लिए किताबों में एक और वर्ड भी है इरेक्ट की वजह, वो भी लिख सकते हो आप, अपराइट, अपराइट। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया रेज योर हैंड, राइट हैंड। जिनको ये समझ आ गया बेटे प्लीज। जिनको नहीं, डाउन डाउन। जिनको नहीं समझ आया लेफ्ट हैंड। जिनको नहीं समझ आया लेफ्ट हैंड। बेटे हार्डी में बच्चे सुन नहीं रहे मेरी बात। जिनको ये नहीं समझ आया वो लेफ्ट हैंड खड़ा करेंगे, राइट वाले डाउन कर लो, राइट वाले डाउन।
जिनको नहीं समझ आया लेफ्ट हैंड, ओके शाबाश, सभी को समझ आ गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। An object approaches the convergent lens from the left of the lens with uniform velocity 5 meter per second, stops at the focus. The image moves, इमेज की वेलोसिटी बतानी है, समझो शाबाश। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मेरे को अपने बच्चों का बेस बनाना पड़ेगा। नंबर 1, बेटे जो लेंस सेंटर से मोटा होता है उसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, साइडों से पतला सेंटर से मोटा, ये किसी भी लेंस का साइड व्यू दिखा रखा है। अगर बच्चा इधर से देखे, अगर बच्चा इसको फ्रंट से देखे, फ्रंट से खड़ा होकर जाकर देखेगा तो सर्कल ही दिखेगा। सेंटर से ये कांच का मोटा होता है, साइडों से किनारी से पतला होता है, तो साइड व्यू ऐसे दिखेगा, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। एक दूसरा होता है वो सेंटर से पतला होता है, साइडों से मोटा होता है, साइडों से मोटा होता है। अगर इसको भी फ्रंट से जाके देखें तो ये भी सर्कल ही दिखेगा, दिखने में सर्कल, पर सेंटर से पतला, किनारों से मोटा, इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, ये कौन से, कॉन्वेक्स लेंस। याद रहे पहले हम मिरर्स की बात कर रहे थे, अब लेंसेज की बात कर रहे हैं। लेंसेज में पॉलिश नहीं करते, ये कांच का बना होता है बस। और मिरर जो पहले करके आए थे वो थे, हमने उसमें हमें सिल्वर पॉलिश पेंट करना पड़ा। कंफ्यूज नहीं होना दोनों को। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन लगती है तो मैं बता देता हूं एक बार। एक कर्व्ड मिरर ले लो, उसको इधर से पॉलिश कर दो, सिल्वर पॉलिश, अब ये कॉन्वेक्स मिरर बन गया। एक और बताऊं, एक कर्व्ड मिरर ले लो, ट्रांसपेरेंट शीट, उसको इधर से पॉलिश कर दो, इधर से, अब ये कॉनकेव मिरर बन गया। मिरर, चारों में कंफ्यूज नहीं होना। ऊपर वाले दोनों लेंसेज हैं उसमें कहीं भी पॉलिश नहीं करते, वो कांच के बने होते हैं। नीचे वालों में पॉलिश करना पड़ता है। गॉट इट। मिरर्स के अंदर रिफ्लेक्शन होती है, लेंसेज में रिफ्लेक्शन नहीं होती, उसमें लाइट आर पार जा सकती है। लेंसेज, लेंसेज में लाइट क्या है बेटे, टीचर क्या कह रहा है, लेंसेज में लाइट आर पार जा सकती है, कॉन्वेक्स मिरर में नहीं जा पाएगी, यहां से टकरा के वापस आएगी, इधर से फेंकेंगे तो ऐसे चले जाएगी वापस। इन दोनों में रिफ्लेक्शन होती है, उनमें नहीं होती, पार जा सकती है लाइट। गॉट इट। अब इसके बिना मैं एक चीज और समझाना चाहता हूँ। ये देखो, ये जो टीचर ने पहले कॉन्वेक्स लेंस बनाया व्हाइट कलर वाला, व्हाइट कलर वाला बच्चा, उसके ऊपर अगर हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट फेंकते हैं तो इस लेंस की खूबी ये होती है कि सारी लाइट को एक सिंगल पॉइंट पर फोकस कर देता है। इसको एक जगह पर कंसंट्रेट करने की प्रोसेस को बोलते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जेंट लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जेंट लेंस। जैसे बच्चा कहेगा सर हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं ये लेंस ले लूं, इसको धूप के सामने रख दूं, धूप, धूप के सामने, ऐसे सनलाइट से आ रहा है और ये सनलाइट की लाइट को फोकस करके एक पॉइंट पर रख देगा। अगर इस पॉइंट के ऊपर मैं काले रंग का कागज रखूंगा, ब्लैक कलर का, तो वो आग पकड़ लेगा। ब्लैक कलर इज द बेस्ट अब्सॉर्बिंग कलर ऑफ हीट। ओके, अगर एक्सपेरिमेंट करना हो तो। अब मैं दूसरा लेंस दिखा रहा हूं, कौन सा, कनकेव लेंस। इस लेंस की खासियत क्या है बेटे, अगर इसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इधर से आती है तो ये उस लाइट को बाहर को फेंक देता है, फैला देता है उसको, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइवर्जेंस।
अंदर कांच है, बाहर एयर है, तो इसी लेंस का नाम डाइवर्जेंट लेंस भी होता है। डाइवर्जेंट लेंस। कोई बच्चा कहता है सर पहले तो आप इसको कनकेव लेंस बोलते थे। कनकेव लेंस भी बोलते हैं, डाइवर्जेंट लेंस भी बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जेंट लेंस भी बोलते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा, कन्वर्जेंस का मतलब है एक पॉइंट पे फोकस कर देना, डाइवर्जेंट का मतलब है आ रही लाइट को फैला देना। जिन बच्चों को ये पॉइंट समझ आ गया, प्लीज रेज योर राइट हैंड, प्लीज रेज योर राइट हैंड। शाबाश, बहुत अच्छी। अब हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चे, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में बोलता है मेरे पास एक कन्वर्जेंट लेंस है, मैंने उसकी तरफ एक ऑब्जेक्ट को मूव करवा दिया प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ये लेंस ऑब्जेक्ट इसके ऊपर मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे रखी, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, 5 मीटर पर सेकंड से ये इधर इधर को जा रहा है। ठीक है। फिर वो कहता है ये चलते 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 लेंस के सेंटर को बोलते हैं ओ, ऑप्टिकल सेंटर। ओ स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल सेंटर। इससे सर्टन दूरी पर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। इन दोनों के मिड पॉइंट को बोलते हैं फोकस, एफ। एफ को क्या बोलेंगे, फोकस। सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओ मैंने ऑप्टिकल सेंटर। अब वो हमें क्वेश्चन में बोलता है इस ऑब्जेक्ट को हम लेंस की तरफ लेके जा रहे हैं और जाकर एफ के ऊपर रुकते हैं। इतनी स्पीड से जाते हुए चलते चलते एफ के ऊपर यहां पर रुक जाता है, स्टॉप्स, इससे आगे नहीं जाता। उसके बाद क्वेश्चन, जो इसका इमेज बनेगा उसकी स्पीड कितनी होगी। उसकी स्पीड मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस विद यूनिफॉर्म स्पीड, मूव्स अवे फ्रॉम द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मूव्स अवे वगैरह वगैरह दे रखी। ध्यान से सुनना, इसके अंदर इमेज कैसे बनता है, टीचर इमेज बताने लगा है। बहुत इंपॉर्टेंट। जो बच्चा इसको ध्यान से सुनेगा उस बच्चे को शाबाश मिलेगी। जितना फोकस इधर होता है ना, उतना ही फोकस उधर होता है, तो मैंने एफ पॉइंट बना दिया। और जितना फोकस से ये सी होता है उतना ही उधर होता है, तो मैंने इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, इमेज बनाने के लिए दो बातें याद रखनी है, सिर्फ दो। जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो लेंस के बाद फोकस में से गुजरेगी। दूसरी बात, जो पहले ही फोकस में से जाएगी, पहले ही फोकस में, वो बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। सर प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है इसमें से, प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा वो होती है जो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है स्ट्रेट लाइन। अब गौर से देखो, फिर से देख, मैं बनाने लगा हूं, ध्यान से देखना। टीचर ने ऑब्जेक्ट से ब्राउन कलर की रे ऑफ लाइट निकाली जो कि येलो के पैरेलल है। ये गई, ये गई, ये यहां तक जाएगी। अब कहां पर जाएगी ये बाद में, फोकस में से, पक्का रूल है, पैरेलल वाली फोकस में से गुजर जाएगी। स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। अब दूसरी बात कौन सी, जो पहले ही फोकस में से जाएगी, जैसे टीचर ये ग्रीन कलर वाली लाइन पर पहले ही फोकस में से निकाल। लेट मी चेंज इट टू द ग्रीन कलर। ये देखो फोकस में से स्ट्रेट रख रही है बिल्कुल, ये गई फोकस में से, ये गई, ये गई, ये गई, लेंस के सेंटर तक गई। उसके बाद थोड़ी सी गड़बड़ होगी बच्चे हमारे से, टेढ़ी हो गई है ये, इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, फिर से बनाते हैं। टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, अगर आपने टेढ़ी कर दिया तो मार्क्स कट जाएंगे। ये गई, यहाँ गए, आपके पास तो वहां पेपर में स्केल होगा, मैं तो हाथ से बना रहा हूँ। ये यहाँ गई, यहाँ गई स्ट्रेट लाइन में, और उसके बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ये गई, देखो ग्रीन लाइन इज गोइंग पैरेलल टू येलो लाइन, ये गई।
तो जिस जगह पर ये आपस में कट करती है ना बेटे, ये देखो सी पॉइंट थोड़ा दूर होना चाहिए, यहां पर बन जाएगा इमेज। तो लेट मी मेक द इमेज बाय व्हाइट कलर, ये बनेगा इमेज नीचे को लटका हुआ। गौर से देखो कैसे, अगर हेड से चली हुई लाइनें ये टकराएंगी हेड, तो यहां पर हेड ही बनेगा, नीचे को लटका हुआ इमेज बनेगा। तो ये इमेज क्या है, इन्वर्टेड, उल्टा है। क्या इसको हम हाथ से टच कर सकते हैं? कर सकते हैं। रियल रियल भी होता है, इन्वर्टेड भी होता है। कौन से लेंस में? कन्वर्जेंट लेंस में। कन्वर्जेंट लेंस का दूसरा नाम क्या था? कॉन्वेक्स लेंस। अब याद रखना, जब मैं इसको 5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे लेके जाता हूं बेटे, तो ये वाला भी जो है हमारा चलता तो है, तेज हो जाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ध्यान याद रखना, जितना जितना ऑब्जेक्ट आगे जाता है उतना उतना इमेज पीछे जाएगा और साइज में बड़ा होता जाएगा। फिर से सुनो, जितना जितना ऑब्जेक्ट आगे जाएगा उतना उतना इमेज पीछे भी जाएगा और बड़ा भी होएगा। जब ये ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर पहुंचता है, तब इमेज भी सी पर पहुंच जाएगा और इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर होगा। सी के ऊपर जाकर ऑब्जेक्ट को खिसका के सी पे लेकर आऊंगा, तो इमेज भी सी के ऊपर चला जाएगा, पीछे खिसकता खिसकता, और साइज बराबर हो जाएगा। इसका मतलब बच्चा कहेगा सर जब तक इमेज सी पर नहीं पहुंचता तब तक इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटा है। बिल्कुल सही। सर अगर ये ऑब्जेक्ट सी से भी आगे निकल जाए इधर को, तब इमेज सी से पीछे चला जाएगा, तब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से भी बड़ा हो जाएगा। तो 3 बातें आपने याद रखनी। पहली बात, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेफ्ट पे, लेफ्ट टू सी, तब हमारा इमेज इमेज छोटा है ऑब्जेक्ट के मुकाबले। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, एट सेंटर, तब हमारा इमेज और ऑब्जेक्ट साइज बराबर होता है फिर। और जब हमारा ऑब्जेक्ट इसके राइट साइड पर चला जाए, एट राइट ऑफ सी, तब हमारा इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाए। ऐसे आपने याद रखना। ओके, तो 7th क्वेश्चन की बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन। जिन बच्चों को ये डायग्राम समझ आ गया, आप प्लीज रेज योर राइट हैंड। बहुत अच्छे। अब हमारे पास लास्ट का 1-2 क्वेश्चन है, नोट कर लो सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 में असर्शन रॉन्ग और रीजन रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 2 में असर्शन करेक्ट और रीजन भी करेक्ट, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, बी ऑप्शन। और इसमें इसमें convex used in the straight line, हाँ ये वाला सही। सी ऑप्शन। और इसमें देख लो बेटे, assertion reason, concave mirror form the real image, correct, reflected rays from the convert, ए भी करेक्ट, दोनों करेक्ट, ठीक है। लेकिन वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ए ऑप्शन। 4th में लेटरल इन्वर्जन होता है, असर्शन बिल्कुल सही। प्लेन मिरर में रीजन गलत है, तो ये सी ऑप्शन। नोट कर लो बच्चे ये सब।
बाकी हमारा अगला चैप्टर करेंगे नेक्स्ट टाइम मोशन पे। थैंक यू। Okay, good afternoon, everyone. You can take like a minute. If you want to finish this, you can finish it. Okay, and then we can move on to English. You can um, put away your science sheets and take out your English. Okay, so take 1 or 2 minutes, relax for a minute. Um, should I erase this? Everybody's okay? Done? Then I'll erase this, okay? If somebody is still noting it down, then I'll stay for 30 seconds. If done, I'll erase it. Okay, so today for class 7, what do you have? Do you all have your this worksheet? You should take it out, active and passive, everyone. So you already have, like, I have given you here the basic way in which active and passive is done. And you have done it in grade 6, and now you are in grade 7, and we have done this earlier also. Okay, so this is basically reviewing. Still, like, you have a cheat sheet where you can, like, go back in case you have, like, you still have some confusion or something. So you can look at the cheat sheet, subject plus modal verb plus object. Like, this is for modal verbs. So you can just see this. Now, in the first few sentences in 1 to 8, you have modal verbs. You have will, must, will, like, then may, must, then might, should. All these are modal verbs, okay? So these modal verbs are used, and you will use it in the similar manner. So what we do is we will start with the first one. He will have read the book. Okay. Now he will have read the book. Now this is active or passive? So this is active or passive? Tell me. Okay. Napier House, Napier. Middle row, the girl in white t-shirt who has raised her hand. Yes. And you can tell me the sentence, okay? What you have to change. It is active voice. It is active voice. And what will be the passive of this? The book will have been read by him. Very good. Perfect. The book will have been read by him. Okay. So the object, book, object has come. Now see, they don't change, they change the position. Okay. And he, who was the subject, has come by. Okay. So this is the subject. Now this is like, will have been is added. Okay, this will be added. So this is how you are going to do all the things. So do 1 to 8, take your time, and then we will solve it. Okay. Yeah, there are some children who have not done. So I'm giving you like 5 minutes. Do 1 to 8. Then we will discuss one by one all the things. Okay.
Everything will be discussed. So I want you to finish from 1 to 8, and then we will start the discussion. One by one, I'll call you out and we can start the discussion. Okay, I can see like, okay, Pythagoras section, you have to adjust your this thing, camera control. Okay, everybody is seen now. Rest everybody is there. Yep. Okay, so who will tell me the second one? The second one. They must sing a song. They must sing a song. Okay. From Pascal House, on my right, a boy in white t-shirt was raised the hand. Come out. Yes. They must sing a song. Must is a modal verb. Okay. So they must sing a song. And the formula is given up. A song must be sung by them. Very good. A song must be sung by them. Okay? A song must be sung by them. I hope everybody has got this right. All of you raise your hand if you got this right. All those who got this right. Yes, I can see a big on. Yes, very nice. Very good. Very good. Next, she will manage the project. She will manage the project. Okay, Hardy, middle row, first bench. Come on. Middle row, first bench. Then I'm going to invite a lot of people. He will be managed the project. फिर से बोलो बच्चे, फिर से say it again. He will be managed the project. He will manage the project. Bete, project is at the end, so you have to bring this object in the front. Okay. Anyone else from Hardy House would like to come forward with the same? Yes. On my left, there is someone. I can see a boy who's raised his hand. Ajo beta, out. Come. Beta, aap attention pay karo, because see, we have to change the position, change the places. So project has to come in the front. Yes. Yes. बोलो बोलो, I can't hear you बच्चा. आ नहीं रही आपकी आवाज. I can't hear you because your voice is cracking. Okay. And so Projector. the project. The project. Okay, she will manage the project. So she is the subject, and this has to change positions. And what is going to be managed? The project. So we'll bring the project. The project. Okay, will, you have to add be, any form of be verb will be, this will become V3. Okay, will be managed, verb 3 it will be, by, this will become, she will become her. This is how you're going to do.
So the project interchange of places, object comes in the place of subject and subject goes in the place of object. So she will manage the project. The project will be managed by her. Okay. How many of you got this right? How? Very good. I knew many of you will get this. And those who did not get this right, don't be disheartened. Ramanuja, how many of you got this right? Ramanuja, very good. What about this boy who's sitting in the middle row, second bench? Beta, did you get this right? Yes, Bache. And if not, have you understood? Very good. I'm very happy that most of you got it right. Aja Bache, Ramanuja, the boy. Yes. No. You got it right or wrong? Okay. You got it. Okay, go back. I can't understand what you're saying. I don't know what's wrong with mics in your classrooms. I think so. They need some better arrangement. I will have baked a cake. I will have baked a cake. Use the same rule. And yes, Pascal, on my right, two boys have raised their hands at the back, second last seat. Yes, one of you can come. I will have baked a cake. Okay. Your voice cracks and words are lost and I'm unable to understand a word. Okay, somebody, okay. Pythagoras, you come because I could not hear what Pascal house boy said. Yes, you come. Cakes will have been baked by me. Very good. A cake. See, the cake was earlier was an object. It has come in the place of subject. It doesn't become a subject. They interchange the, it is a way. The focus changes. Okay. So this is another way of expression. A cake will have been baked by me. Okay. Next. Very good. I hope many of you got this also right. They may read the article. They may read the article. Okay, Hardy House, I can see a lot of hands raised. Middle row, girl sitting at the back. Second last bench or third last bench, come. Yes, the one who turned around. Okay, you come. They may read the article. कोई बात नहीं, आप आ जाते, कोई बात नहीं. As Hardy, you can come. Then next your friend can come. They may read the article. The article may be read by them. Very nice. Very nice. Perfect. I hope many of you have got this right. All those who got this right, raise your hand. Yes, I knew. Smart children. Very good. He must clean the room. The next is, he must clean the room. He must clean the room. Who will answer this? Okay, Ramanuja. Okay, middle row for this girl, first bench. Aja. He must clean the room. The room must be cleaned by him. The room must be cleaned by him. Very easy and very simple. Very good. Now, next one is the window should be opened by you. The window should be opened by you. So here, this is a passive sentence. You have to convert it into an active one. Okay. A Napier, middle row, the girl who has raised her hand, Aja. Yes. The window should be opened by you. You should open the windows. Yes, very nice. You should open the window. Okay. This is not in your this thing. I'll just write down.
This is a passive sentence. I want active for this. The room must be cleaned by him. Okay, this is already, sorry, it's already given. The next one, this is the wrong one. I wrote, I could paint the wall. I could paint the wall. Okay, who will write down this? I could paint the wall. Very nice. Someone from Pythagoras. Nobody has come till now. Okay, on my right, the boy who's sitting here. At the third bench, Aja. Yes. Okay, sorry, it's a girl. Okay. I could paint the wall. Could is your model. Okay, it's a model verb. That the wall could be painted by me. Very good. The wall could be painted by me. Very nice. So this is how you will get practiced and you will never make a mistake. Next one is, he might bring the documents. He might bring the documents. Okay. Napier, middle row, last bench. Middle row, last bench. Come on. He might bring the documents. Might, you should know the meaning also of all these. Might means there is no 100% assurance or 100%. There is a probability that he might bring. Okay. He may not. He might not. So he might bring the documents. Bolo, I can't hear. Could you please? Sorry, I don't think so. Even your friends could hear you. Thales? Okay, I have missed Thales today. Yes, Thales, yes. Come out. The one in blue t-shirt who raised her hand, middle row. The one in blue t-shirt, she raised her hand. Come out, Thales. Okay. He might bring the dog. Sorry, beta, I could not hear you, so I had to invite somebody else. Okay, thanks anyway for coming. He might bring the documents. What are documents? I would like to know. Okay. The documents might be brought by him. Yes, the documents might be brought by him. By him. The documents might be brought by him. Okay. Who will tell me what are documents? What are documents? Anyone? Okay, I can see your hand raised. Yes. Richardson. Last row on my right, last row, last bench. There was a boy who raised his hand. Okay, even Pascal. Okay, come. Pascal who has raised his hand, come. What are documents? That boy on my right. The boy on my right. Okay, this is going to create some confusion. Okay, the girl, Pascal, in the Pascal room, the girl in green t-shirt who raised her hand. Aja, tell me what are documents? I hope you all know it because it's a very common usage words. Very common usage. I did not hear. What did you say? Question or answer. Documents. Documents are like, I just want to know what are documents. The word documents, what does it mean? Okay, Pascal, there are boys who have raised their hands. Please come forward. Aja. The files or assignments. Files. What files? Assignments. No, they are not documents. Basically, they are official papers. Okay? Anything which is official papers, like important papers, let's say your house deed, or your, like, when you will pass your class 10th, your report cards, they are like all your documents. When you have to take admission somewhere, all the things which are required, everything, okay, they are all documents. All these things are documents. All official paper, all papers which are basically
like, used for professional purposes, for education, for other things. They are all documents. Okay. So basically official papers. Okay. Any other word you have come across which you want to know? The article may be read by them. What is an article? Article तो एक चीज होती है. What is the article might be read by them. Anyone can tell me what is an article? What does article, the word article means here? Okay. Yes, Pascal was that boy who raised his hand on my right. Aja. What is an article? Paragraph on a specific topic. Yes, very good. I'm sure you are doing article writing. You can write an article for your school magazine. You can write an article for some, like, so there can be different kind of articles in the newspaper. Like, there can be different kind of articles in the magazines. And if you people read, you should read them. How many of you love to read? Anyone who likes to read? For pleasure. Not like, padna to sabko padta hai. But, oh, Thales, I have seen a few hands raised. Rest, no one. How do you survive without reading? Hadi, yes, I can see very few children reading. Very good. Those who are reading, keep up the good work. And those who are not reading should start reading. And right now, I'm suggesting a book. Okay? Everyone should read this. लिख लो इसका नाम. Everyone has to read. And if you want, I can send the PDF to your class teachers or your teacher, and she can share it. Like, it is an autobiography of APJ Abdul Kalam, who was India's missile man. It is beautiful. And then I can send you more short stories. We can start with short stories, but I want each one of you to read. Okay? This is a must read. You should. Okay? Everyone. See, these missiles only saved us from Pakistan war. Yes? BrahMos and all these. So see, everything is linked one by one. Language is such a vast. Let's come to the next part. Now here we come at the back from 9 to 16. Okay, when we come from 9 to 16, you will see that most of them are WH word. That means questions. So, and there are some negative and some normal, assertive. Okay, or affirmative, whatever you call. So here we go. Won't you attend the meeting? The first one. Won't you attend? I hope you have copied down this. Won't you attend the meeting? Can't forget to put the question mark. We have to put the question mark. So who will tell me? Won't you attend the meeting? Excuse me. The meeting, like, because it's a question, so it has to start with the question word. Okay. Okay. Pythagoras. Middle row. A boy at the end had raised his hand. You can come. Won't you attend the meeting? No. Napier. Middle row. Last bench. Last or second last bench. Come. One of you can come. There are two people who have raised their hand. Chalo, one of you can go. Come. Very easy. Okay, next Sir. round. Yes, bolo. Want the be attended by you. Very good. Won't the meeting be attended by you? Okay. So you have to identify this is the subject here and this is the object. Okay. So we are talking. So, but it starts with the question word. So won't the meeting. Okay. It comes here. Meeting be attended and the subject will go by you. Very nice. Perfect. Okay. So this is how, because we can't change this into a statement. That happens only in direct, indirect.
In passive active, the question remains a question. Next, what will you do if the meeting is cancelled? What will you do if the meeting is cancelled? Only one person in the whole 200 children? Oh my God, that's bad. 2 people? I was expecting 2 people not to raise their hand, rest all will. Okay, Hardy House, middle row, there is this person who has raised her hand. Aaja beta, come. What will you do if the meeting is cancelled? Cancel, what will you do? बेटा देखो यहाँ पे आपने क्या गलती करी है? You have not understood like what is the you and meeting are subject and object. Okay? So cancelled को अभी हमने ऐसे नहीं use करना कि because it is at the end हम उसको लेंगे. You have to identify which is the verb, like यहाँ पे we identified this is the subject, this is the object. So here that is why the meeting was brought in front. You cannot do this. So someone who will come forward and tell me this. What will you do if the meeting is cancelled? Better pay attention, okay? And thanks for coming. Okay. Okay, Ramanuja, center row, the girl who has raised her hand. What will the meeting is cancelled? Can't hear you, sorry. अपना mic ठीक से करो. Meeting is cancelled. What did you say? Sorry, bache, I am unable to understand because the same issue, your voice cracks, I miss the words, and I am unable to comprehend anything. Okay, so what you have to do is you have to check your mic. So I think so I can request the teacher to see what is wrong with the mic. Okay, Hardy House, middle row, 2 people have raised their hand. One of you can come quickly. What will you do? We have to keep this as a question. Yes. Will be done by you if meeting is cancelled. Very good. What? This stays the same. Okay. Will be done by you. Okay. By you. So when you put by you, it becomes the object. So what will be done by you if the meeting? देखो, the meeting है if the meeting is cancelled. Okay, so this is how, that is why, there is a little bit of difference. So here, change ho chuka hai, done by you if the meeting. So this, the position has been changed because it's a question. We cannot make this different, okay? Okay, I hope everybody has understood. If anyone has not understood, you can raise your hand. Anyone who is still unsure? Everybody is fine? Okay. There's one little girl who, yes, Hardy House, yes. Beta, aake batao what you have not understood. Come, aaja. Let's clear the whole thing. What is the subject and object है वो पीछे कैसे भी देखो, this is the subject, you is the subject here, and meeting is the object. Okay, so here we have interchange. It is come here because it's a question. So what will be done? Okay, little bit of change of words, like done is the verb 3. So we have done by you. So it by you normally comes at the end. ऐसे आता है. So we bring it here. If the meeting is cancelled, the meeting. So the meeting will go in. It's like always the meeting, like when you have this. So normally when the subject comes in front,
object, it is the, it takes the form, but because it is a question, we cannot change what here. So we have changed the word order here. Okay, so it is what will be done by you if the meeting is cancelled. Okay, so this is how it is going to be. Now, if we do the next one, you might understand it even much more better. Next one. Who is going to win this game of chess? Who is going to win this game of chess? Who is going to win this game of chess? Who? This is the basic subject. So when it is who, what, who, when who is the subject? Who is the subject? It becomes, there's a word, it changes. Okay, Ramanuja, center row, first bench on my right, on the right side, on my right, your left. Yes. Game going to manage. Now we put some answer game. Question mark. What? Guys, this chess game question mark. Sorry बेटा, एक word समझ नहीं आया. I'm so sorry. Could you please stay a little away from the mic? I feel you people are too close to the mic. Yes. Guys, Yes. question mark. Yes. So it is by whom. When who is the subject, it becomes by whom. By whom. Okay. So already changed. By whom is the game of chess. By whom is the game of chess? Okay, by whom is the game of chess going to be won? Okay, now this is a more better way. There can be another way also. Who is the game of chess going to be won by? Who is the game of chess going to be won by? This is like a little complicated, more acceptable, more common language. So I think so you are good with this. Next one. Will you not finish the project on time? Anyone? I can see a lot of hands raised. Okay. Why the same people? Why? Okay. Tails, this girl who has raised her hand on my right. On my right, your left. Yes. Come on. Will you not finish the project on time? Will you not finish the project on time? So this has a negative. Okay, this has a negative. So you have to pay attention to that also. Yes. Ma'am, will the project not be finished by you on time? Perfect. Beautiful. Will the project not be finished by you on time? It's beautiful. Okay. There's another way we can do it. Won't. Won't the project be finished by you on time? Won't the project be finished by you on time? So if you are using the same will, then what she said was absolutely right. If we use won't, it's again a negative word. So won't the project be finished by you on time? Will the project not be finished by you on time? So I hope you people have done this right. Now come to the next one. Won't the new product have been launched by them by then? Okay, little bit of twist. Okay, little bit of twist here. Won't the new product have been launched by them by then? Who will answer this? Why the same people? Don't be afraid. Just go for it. Just go for it.
ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा ना. नोबडी इज जजिंग यू, कोई डांट नहीं रहा आपको. दिस इज द वे वी ऑल लर्न. हमने भी गलतियां करके ही सीखा है. ओके, इवन I made mistakes. We all make mistakes and we learn. So you should never be afraid of making mistakes. People who don't make mistakes never learn. Okay? Yes, don't make too many mistakes. That's also a problem. But to an extent, chalta hai. Doesn't matter. Okay, here. Pascal House, the girl in green t-shirt, come forward. Yes, she's eager to answer. Won't the new product have been launched by them by then? What we have not chosen Very good. Won't they have launched the new product by then? Won't they have launched the new product by then? Okay. So this is done. Won't they have launched the new product by then? Very good. Next. Why won't she have finished the course by next semester? Why won't she have finished the course by next semester? Anyone else? I can see the same person. Out of 200 children, only one hand raised. Okay, two. Ramanuja. Center row, first bench, Ajo. Why won't the course have been, why won't she have finished the course by next? बोलो बच्चे. बोलो. Now see, in this active, you have seen this is the focus is on her finishing the course. In passive, the focus will be on the course being finished. Okay, so the focus changes. That is all. So why won't अगर focus course पे आ गया, so we'll talk about the course first. Okay, earlier we were talking about her. Why won't she? Because she's the subject. So we are focusing on her, that why won't she finish the course? But when we go to passive, we are focusing on the course being finished. And we are focusing on the course being finished. So how will we change it? Who will bring it here? 4. Anyone? I can see very few hand raised. Yes. Tails, that little girl, Aja beta. Focus in active, focus on her to finish the course. In passive, focus on course to be finished by her. Okay? Chalo bolo. Say, Why won't the course being finished by her by next semester? very good. Why won't the course have been finished? Why won't the course have been finished by her by next semester? Why won't the course have been finished by her by the next semester? Okay, so see, the focus changed from she finishing the course to the course being finished. Okay, that is why there is interchange of first in active, it is always the doer of the action. And then next, it becomes the action is being done. So the focus changes, and this is why the whole the word order changes. This is what.
Next is the last one. Sorry, next one. Why won't they discuss the conference? Why won't they discuss the conference? Why won't they discuss? Sorry, what won't they discuss at the conference? What won't? Okay. Napier House, middle row. There are two girls who have raised their hand. Ajo. Yes. The one on my right. What won't they discuss at the conference? What won't they discuss at the conference? What won't be discussed at the conference by you? By them, beta. What won't be discussed by them at the conference? Okay. What won't be discussed by them at the conference? Because the focus changes. Okay. So what won't be discussed by them at the conference? Okay. So what won't they discuss at the conference? Now you have to bring the conference in the beginning. So what won't be discussed by them at the conference? Next. Will you vote in the next elections? Will you vote? This is a little like, this particular sentence, I especially, or question, I especially got it because one thing I have to tell you, all sentences cannot be put in passive. There are certain sentences which cannot be put in passive at all. Okay, there will be no passive for them. So all cannot be done. And this is just to make you sure, like, these kind of sentences will never come in your exam. Okay, even in boards, they will never give something like that, but you should know about them. So this is that you should be aware that there are certain sentences or questions which cannot be completely done in passive. They can be done, but not like the complete proper method. Okay, so here it is. Will you vote in the next elections? Here, the normal verb 3 is not. Past participle is not going to be here. Present participle, like, or sorry, continuing, present continuous will come here. Okay, so the verb order also changes here. So it will be, will you be voting in the next election? Will you be? So it doesn't go by the rule. So write down, everyone. The passive for this will be, will you be voting in the next election? And I want to know, what did you people write? So basically, we put verb 3 here, but here, like, it is continuous. It has come in. So will you be voting in the next election? This is how it will be done. Okay, this is just to make you aware. I know I have so much experience that these kind of sentences barely ever appear in the exams. Okay, so will you be voting in the next election? And there's another way. Will you vote? Will a vote be cast by you? Okay. Will a vote be cast by you in the next elections? So this is another way we can do it. Cast is the word we use when we हम बोलते हैं ना vote देकर आया है. In English when we say we have casted our vote. When you must have seen in your home, all the adults, they have this mark here. So that is, you cast your vote. Okay, so you cast your vote. That is the word that is used. So will a vote be cast by you in the next elections? Okay, so will you be, first option will you be voting in the next election, or will you cast vote in the next election? Okay, so this is how it is. I hope things have become much more clearer. If no, but I'm always open to questions. Okay, so you can always bring your questions, and before we begin our next class, you can always raise your hand, and you can always ask me whatever you require, whatever is your concern, or whatever is your query, concern, questions, anything. Never hesitate. Never hesitate in asking your concerns. Okay, so please go ahead. I know it's your time to pack your bags. Have a good day.
I hope you enjoyed the class. Okay, thank you very much. Have a good day, all of you.